तो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय हर्षित। पाइथागोरस थ्योरम इज बेसिकली वर्क फॉर राइट एंगल। एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस, एंड दिस इज अदर टू साइड्स, साइड 1 and side 2. And Pythagoras theorem is basically says that the square of hypotenuse is equals to the square of the other two sides sum. Means AC square is equals to AB square plus BC square. तो गाइस, पाइथागोरस थ्योरम को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है जैसे कि एक ट्राइंगल दे रखा है हमें, इसके साइड्स है A B C और साइड गिवन है AB equals to 3 and BC equals to 4, and we can calculate as AC. So we know that hypotenuse square is equals to square of the other two sides sum. We can apply this. AC square equals to AB square plus BC square, and AB is given already 3 का square, and BC is equals to 4 and 4 का square. 3 का square is equal to 9, then 4 का square is equal to 16, and total is 25. Then AC square is equals to 25. So AC is equals to under root 25, and final value of AC is equals to 5. This is the first example. Now another example is, अपने पास एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल A B C, एंड ए बी कैलकुलेट करना है। रिमेनिंग जो साइड्स हैं AC इज इक्वल्स टू 5 एंड BC इज इक्वल्स टू 4, ए बी कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देन पुट द वैल्यूज। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, AB स्क्वायर हमें पता नहीं है, सेम एज BC इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, AB स्क्वायर इज रिमेन सेम, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16. देन नाउ 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 16 माइनस 16 बिकॉज 25 16 अपन ने इधर लिया इसलिए माइनस 16, दैट्स इट। AB इज इक्वल्स टू 9 अंडर, देन फाइनल वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल्स टू 3.